होगी बारिश बंद होगी बारिश। छाता बंद कर ले है ही नहीं एक्चुअल में इसके ना कवर नहीं, कवर है ही नहीं है तो सही, पर उतार के ठीक से बोलना पड़ेगा तो बुरा है पहले खोल नहीं रहे हो तुम, बुरा है गलत है ना, ये तो ऑफिस में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, आगे पकड़ो यार, भाई छाता पकड़ो, बंद कर दो छाता। अरे छाता हटा यार, छाता नहीं करना भाई ऊपर बिल्कुल भी। अब भाई या तो बंद कर लो यार, छाता बंद कर दो ना, बंद कर लो यार। अब क्या बंद करो यार, अब तुम देख आवाज किससे निकल रहा है। अरे ऊपर जाके करेंगे यार, पलटो सर्दियों में मत किया कर, सर्दियों में बारिश में मत किया कर। बारिश बंद हो गई, लगा ही नहीं था 5 मिनट। हाँ इसको लगा दो, थोड़े से मिल जाएंगे यार, कैमरा तो बच जाएगा, शूट भी हो जाएगा। आए थे मेरे को यार छोड़ा थोड़ी बड़े बेहतर रहेगी, इसीलिए जो रेजिलियंस है वो दिख रहा है। सर इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी दी है, IMF ने बोला है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया, ब्राइटर स्पॉट है, बाकी कंट्रीज की फिर भी दर कम है और इंडिया की बहुत ज्यादा है। क्या कहना है इसके बाद, और क्या रीजन है कि इंडिया एक अलग से निकल भी पड़ रहा है? इस पे तो मैंने कई बार कहा है, वैसे जब कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि विकास दर को देखें तो आपको ध्यान होगा जब महामारी का दौर चल रहा था, जब बहुत कम लोग ये विश्वास कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि 7% से ज्यादा विकास दर आएगा, और वैसे ही आया है। पिछले 3 सालों में पहले करीब 9.5% जो आया था, उसके बाद फिर 7.2% और इस साल 7.3%। तो हमने जो महामारी के समय में जो नीतियां अपनाई थी, जो सप्लाई और डिमांड का जो मिश्रण करके, और डिमांड में भी जो बहुत ही
सटीक जो टारगेटिंग की गई थी उसके कारण खर्च उतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफी जिनको जरूरत थी उनको लाभ पहुंची। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है काफी बढ़ाई गई है, करीब 3.5 गुना बढ़ी है। तो इन सब के चलते, अच्छी नीतियों के चलते भारत का जो भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है और ये IMF को और बाकी सबको एक्चुअली साफ दिख रहा है। और सर जैसे आजकल हम क्राइसिस देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन के ले लीजिए, अभी इसराइल हमास का ले लीजिए, पायरेसी भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन? यदि आप इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझें तो जीडीपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंजम्पशन होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो खर्च होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को घटाकर, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें जो दो मूल जो आइटम्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तो उतना ग्लोबल फैक्टर्स में उतना ज्यादा निर्भर नहीं करता और ये काफी डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू जो स्थिति है उसी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों, एक्चुअली कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जो NSSO की डेटा आई थी, इन्वेस्टमेंट करीब 10% अभी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन 4.5% करीब आई है। और मेरा ये कहना है कि जैसे आपको ध्यान होगा 2018-19 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमने थीम जो लिखा था, वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरल। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो उसका थोड़े दिन बाद कंजम्पशन पे अच्छा असर आता है। तो इसीलिए भारत में जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों, मेरा जो आंकलन है कि आगे चल के अच्छा चलेगा। इसके अलावा थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि इस साल जो है वैश्विक स्थिति सुधर रही है, तो इससे एक्सपोर्ट्स पे भी मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो कि भारतीय हमारे कारणों पे निर्भर करती है वो तो अच्छा कर रही है, और एक्सपोर्ट भी यदि अच्छा करेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छे विकास दर दर्ज करेगी। सर क्या हम अभी कह सकते हैं कि हम कोविड के इम्पैक्ट से बिल्कुल बाहर आ गए हैं? हाँ, इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों? ग्लोबल इकोनॉमी अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है, क्योंकि जो कोविड में जो खर्च की गई थी उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया था, और इन्फ्लेशन को उसको कम करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ाए गए हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स अभी कम नहीं हुई हैं। इसके विपरीत यदि भारत में देखें तो भारत में इन्फ्लेशन तो काफी कंट्रोल में चल रहा है। थोड़ी बहुत जो है पॉलिसी रेट जो इंक्रीज कर गई वो भी और कम हो सकती है आगे चल के, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जैसे फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम घटाया जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी स्थिति में है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो ओवरऑल भारत जो है, और वैसे आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सारी जो है महामारी के पहले के दौर से एक्चुअली कम हो चुकी या फिर बेहतर स्थिति में है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत पूरी तरह से महामारी से उभर चुका है। सर AI का बड़ा इम्पैक्ट बताया जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं ये सुन के कि उसका रोल नेगेटिव हो सकता है, सारी जॉब्स ले जा सकता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें मैं अभी कुछ चंद दिनों में काफी रीडिंग कर रहा था। MIT के 2 प्रोफेसर हैं, डैरेन एचिमोग्लू और डेविड ऑटर, जिन्होंने इस पे काफी काम किया है। तो इसमें ये एक्चुअली हमें समझना, 2 पहलू हैं जिसको हमें समझना चाहिए। एक, वो ये बताते हैं कि यदि आप जो नैरेटिव्स हैं AI को और ऑटोमेशन को लेके, उसमें या फिर बहुत ही भय से नैरेटिव होते हैं, या फिर कभी कभी एक्चुअली अरे कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों एक्सट्रीम। लेकिन उनका जो अनुमान है, और अच्छा शोध करके उन्होंने अनुमान लगाया है कि ओवरऑल जो असर है इसका करीब 8% से 10% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि जो काफी जो भय वाले जो सिनारियो लोग बोल रहे हैं वो उतना भय वाला नहीं होगा। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू ये कि एक्चुअली आपको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो ऑटोमेशन है और टेक्नोलॉजी का जो असर है, ये पिछले करीब 2.5 शताब्दियों से चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है। दिलीप कुमार साहब की एक बॉलीवुड की मूवी है नया दौर,
यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें एक्चुअली दर्शाता है कि दिलीप कुमार जी जो है टांगा चलाते हैं और एक बस आती है तो बस और टांगा में एक्चुअली एक रेस होती है। तो ये टेक्नोलॉजी और लेबर की रेस है। तो करीब और वो 50 की दशक की मूवी है, उसमें भी ये जो टेंशन है बताई गई है। तो पिछले 2.5 शताब्दी में ये एक्चुअली चला जा रहा है और लोग ये बताते हैं अरे अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमोबाइल आई तो एक्चुअली सारे नौकरी जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही आप यदि एटीएम देखें, एटीएम जब एटीएम आए तो एक्चुअली लोगों को लगा बैंक वाले टेलर्स को टेलर का जॉब चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप पूरी तरह से देखें, यदि विश्लेषण संपूर्ण तरह से यदि एक्चुअली उसको आप विश्लेषण करें तो नौकरियां बदलती हैं। जो टेलर के काम कर रहे थे वो एक्चुअली अब कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां गई हैं बहुत ज्यादा से, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दूसरा पहलू है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो भय वाला जो काफी सारे लोग वो मेरे अनुसार उन्होंने अच्छी सही तरीके से पढ़ा नहीं है और जिसको उतनी मतलब शोध पे उन्होंने देखा नहीं हो तो उनको ज्यादा भय लगता है। लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें जो है काफी सारा जो भय वाला जो नैरेटिव्स है उसको हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना भय का विषय है। सर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमीज और इंडिया किस तरीके से ध्यान रखे, जिस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या कंसर्न आपको दिखते हैं? देखिए, मैं कंसर्न से नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब भारत जो है काफी अच्छा सिचुएशन में है, लेकिन हमें जो है काम जारी रखना है। मेरा ये मानना रहता है कि जब आप तेज दौड़ रहे हो एक्चुअली, और यदि परिस्थिति अच्छी है तो और तेज दौड़ो। इम्पेशंस मुझ में रहती है एक्चुअली विकास दर के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो काफी सारे रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसको और सुदृढ़ बनाए एक्चुअली। जैसे लेबर लॉ बिल जो है वो पास हुई थी 2020 में, उसका जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स जो हैं उसको एक्चुअली राज्यों के साथ जो बातचीत करके उसको एक्चुअली लागू कराया जाना चाहिए और तेजी से करा जाना चाहिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों पे एक्चुअली काफी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पावर सेक्टर में जो कुछ सब्सिडीज हैं उस पर ध्यान दें, ताकि जो वाटर डिप्लीशन जो होता है वो एक्चुअली वो ना हो उतना। वैसे ही स्मार्ट मीटर को जो लगाना है राज्यों में, स्मार्ट मीटरिंग उस पे अच्छा काम और आगे होना चाहिए ताकि जो पिल्फरेज है वो कम हो जाए। वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम हो रहा है अभी उसको भी आगे बढ़ाएं ताकि ये सब मिलजुल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स जो है हमारी, उनकी कॉस्ट है वो कम होगी, और जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो एक्चुअली जो विश्व में जो बाकी कंपनियां हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, अच्छे तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आगे चल के हमें जो कदम लिए गए हैं उसको एक्चुअली और उसको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है और आगे भी और कदम लेने। एक आखिरी बात जो बताऊंगा, कुछ राज्यों में हमने देखा है जो ये रेवड़ी बांटने की जो कल्चर आई है, इससे हमारे जो मतदाता हैं उसको एक्चुअली उन्हें काफी सतर्क रहना है कि जब रेवड़ी बंटती है उससे एक्चुअली अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा असर आता नहीं है, रोजगार नहीं बनती है। जैसे और एक उदाहरण से बताता हूँ, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया निवेश किया और 100 रुपया निवेश करके आप 95 रुपये उठा रहे हो, तो वो तो अच्छी निवेश हुई नहीं। लेकिन आपने 100 रुपया लगाया और 3-4 साल में आपका 100 रुपया 400 या 500 हो गया, तो वो तो अच्छा निवेश हुआ। तो जब रेवड़ी बढ़ती है तो 100 रुपये के बदले आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था को सिर्फ 95 रुपये आते हैं, जबकि जब पूंजी बनती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, तो 100 रुपये लगते हैं और लेकिन 300-400 रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। तो ये हमारे मतदाताओं को समझना बहुत जरूरी है कि रेवड़ियों के पीछे एक्चुअली जो है वो चंचलता है उसमें एक्चुअली ना जाए, लेकिन यदि उन अपने इसमें सुदृढ़ एक अच्छा प्रोग्रेस चाहते हैं तो एक्चुअली जो पूंजी बनती है उस पर एक्चुअली ध्यान दें। सबके साथ दिक्कत ही है। छतरी आई। अरे मैडम को भी ले आओ यार, कितना दिखाओगे?
रिकवरी कर लो। जल्दी आ जाओ यार ना। भाई बच्चे आ रहे हैं, जैसे आने काम से आ गए ये तो ऑफिस में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। ठीक है। पकड़ो यार, किसका भाई छाता पकड़ो, बंद कर दो छाता। अरे छाता हटा यार। छाता नहीं करना भाई ऊपर बिल्कुल भी। अब भाई या तो बंद कर लो यार, छाता बंद कर दो ना, बंद कर लो यार। अब क्या बंद करो यार, अब तुम देख आवाज किससे निकल रहा है। अरे ऊपर जाके करेंगे यार, पलटो। पीछे हो जाओ ना, तो मुझे फोटो पीछे हो जाओ, मेरे ऊपर कर रहे हो। कैमरा तो बच जाए। आगे बैठ जाते हैं मालूम थोड़ी ना यार, कार्ड हो जाएगा। अभी तो खाली है, आगे खाली है, एक सीट आगे खाली है। बंद कर दो ना बस। आने फ्रेम में आना प्लीज, कर दो। अरे बारिश में क्या करेंगे, बारिश में कैमरा ही हो जाएगा भाई। अभी तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चलो हटो। अरे हट जाओ, छाते वहीं लगा दो सारे। अरे छाता वाले हट जाओ यार। हाँ यहाँ लगाओ छाते। मैडम आप आ जाओ भाई। हो जाएगा यार।
चले जा रहे हैं। अभी तो बाइक ही रखा है, एक क्लोज रखा है। मैंने बाइक रखा पाँच मिनट में 2 मिनट हो आशीर्वाद तो सही नहीं आ रही हमारी सारी अभी तो नहीं आ रही है। आ गया वो छाता कितना खास हट जाइए अम्ब्रेला, अरे आगे आ जाओ अम्ब्रेला, हट जाओ। अरे करना है प्लीज। आगे सर हट जाइए, सर आगे से हट जाइए। तो चला के वहीं पे ही दिखा दो। रोज भी है ना लाओ तो भाई यार कौन है मेरे पीछे? थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूँ अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार। छाता पीछे कर दो। क्या कर छाता यार क्या करती है बहुत। जय श्री राम। बारिश भी बंद हो गई। तो बनाया हुआ है ना। ले जाऊं नहीं तो दौड़ ही जाएगी। ड्रामा मत करो।
आउटपुट दे रखा है। हेलो है क्या? हटाओ यहाँ से। हाँ हटाओ यहाँ से। ऑन है बोलिए बोलिए ऑन है। अंदर लेके जाना है। सलामत यार कौन है मेरे पीछे? भाई थोड़ा सा पीछे आना यार। सर इधर आइए ना तो भाई साहब फिर हम भी आगे कर लेंगे। सलामत यार कौन है मेरे पीछे? मैडम आगे थोड़ा मैडम आगे आ जाइए। थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूँ? हाथ अरे ये नहीं छाता बंद कर दो यार। छाता पीछे कर दो। क्या कर छाता छाता यार क्या करती है बहुत। जय श्री राम। बारिश भी बंद हो गई। तो बनाया हुआ है ले जाऊँ नहीं तो दौड़ जाएगी। आउटपुट दे रखा है। लाओ तो भाई सलामत यार कौन है मेरे पीछे? मैडम आगे थोड़ा मैडम आगे आ जाइए। थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूँ? हाथ अरे ये नहीं छाता बंद कर दो यार। छाता पीछे कर दो। क्या कर
छाता छाता यार क्या करती है बहुत जय श्री राम हो गया बारिश भी बंद हो गई तो बनाया हुआ है ले जाऊं नहीं तो दौड़ ही जाएगी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको तो सरकार तो प्रोत्साहन तो देगी। तो सरकार का जनता का सबसे बड़ा वर्ग होता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है टैक्स स्लैब्स को लेकर के, टैक्स में आते कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, उसके टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स के जो स्लैब्स है उसमें कुछ चेंज करने की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन इंटरम में शायद कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी। गुंजाइश तो बहुत है कि बस टैक्स स्लैब्स या जो अपने जो नए टैक्स रेजिम है उसमें अगर कुछ और सहूलियतें दी जाएगी तो शायद लोग न्यू टैक्स रेजिम अपनाएंगे। तो लेकिन इंटरम बजट में ये अनाउंसमेंट होगी कि नहीं, मुझे जरा डाउट लग रहा है। टैक्सेशन को लेकर एक चीज है कि सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनोमलीज जो है उस पर तरफ ध्यान दिया है कि आपराधिक ना मानते हुए इसे गलतियां मानते सुधारने का मौका दिया जाए टैक्सेशन में। इस बार भी क्या वो जो पॉजिटिव अप्रोच है सरकार का टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दबाव डालने की बजाय प्रोत्साहित करने के लिए विवाद से विश्वास का जो नीति रही है सरकार की, उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, वो तो बढ़ाएंगे क्योंकि वो तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डीक्रिमिनलाइजेशन जो हमारे इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे लॉज जो बहुत ही यानी ऑलमोस्ट ब्रिटिश काल से वो लॉज है, उनको तो डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। और वो तो एज ऑनगोइंग प्रोसेस, उसे हम एक बजट में करेंगे या दूसरे, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस, उस पर तो बहुत साल लगने वाले हैं। और फिलहाल जो हमारे माइक्रो नंबर्स है काफी स्टेबल है वो, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो लगातार परेशान किए हुए पिछले 1.5-2 साल से सरकार उससे लड़ रही है। आरबीआई ने भी काफी सारे कदम उठाए, लेकिन महंगाई जो है उसका कहीं ना कहीं बजट पर भी असर दिखेगा। तो महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो पार्ट है वो बजट में आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट देखो, महंगाई का जो है वो तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट कर रही है, हर 2 महीने में वो तो कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दिखाई देंगे। जो भी है वो बेसिकली वुड बी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है। और अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जहां हमें अभी 5.9 पे है, 4.5 पे लाना है, तो उसके हिसाब से बजट पे होगा। तो इन्फ्लेशन की आई थिंक आरबीआई इज इन कंट्रोल ऑफ इट। सर, बहुत सारी लिमिटेशंस है इंटरिम बजट होने के नाते, वोट ऑन अकाउंट होने के नाते, तो सरकार के पास कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पे एक चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावने बजट का? सरकार के पास स्पेस है, लेकिन ये सरकार मैच्योर सरकार है, वो लोगों को लुभाने के लिए बजट नहीं प्रिपेयर करेगी। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूं? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो।
expect personally from this budget, and what kind of announcements you are expecting in this budget? I think this is an interim budget. So in that sense, I think this budget will underscore what the government has done in the past and what it will expect to do in the future. That is, it will be an interim budget and then they will do a final budget later to underscore that. If you look at the current environment in the context of the geopolitical tensions or before that the pandemic, I think the Indian government has done well to keep the economy doing very well. We're today the 5th largest in the world, growing at 6.5%. And we will be, in the next few years, the 3rd largest economy in the world. I think the government will continue to underscore its efforts in infrastructure. They have encouraged defense. I'm sure they will give a fillip to investments in space. They will work on roads, rail, airports, and build in looking at the way the world is looking at India, looking at the China Plus One strategy, maybe they will try to give a fillip to manufacturing and also they should protect a little bit the Indian industry from maybe cheap imports that may be coming from other parts of the world, so that manufacturing grows और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उस पर हमारा ज़्यादा जोर लगा जाए. In past 10 years, we have seen this government in every budget comes with something which is a very different kind of initiative. Like just before the election in 2019, we have seen farmers benefit scheme, which was Kisan Samman Yojana. So in this budget also, do we expect something very out of the box scheme or something which changes the scenario in any sector? I think interim budget hai, so there will be some limitation. But I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them if you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming. So that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. India is definitely feeling some pressure from the fiscal deficit side. It's already 5.9. So investing in infrastructure is a very prime aim of this government we have seen in past many years. But how much liberty is have seeing the present fiscal deficit and in this target of 4.5? So I think they had always said that they would be expecting to come to 4.5%. And so that was always meant to be a sort of a landing rate to get to there. And if I see the way the government moved, they have moved, monetary policy and fiscal policy have worked hand in hand. So you look at the finance ministry and you look at the RBI, they have worked largely in a very concerted fashion to make sure that also inflation remains within check and they continue to improve year on year. In past few years, we have seen that government is quite ambitious for a 5 trillion economy, and now the other agencies are also supporting the claim of Indian government that by 2030 will be a 7 billion economy, and the ambition of the government is to make India a 30 trillion economy by 2047. So, do you see something very out of the box in this budget which supports the aim of 30 trillion economy by 2047 or 7 trillion economy by 2030? I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they're growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is, and थोड़ा सा tweak करते रहेंगे, so it should improve and not go down. सर मिडिल क्लास जो है उसकी हमेशा उम्मीद कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब्स में रिलैक्सेशन की या टैक्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. इस बजट में सरकार कितना उस तरफ जा सकती है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, थोड़ा और स्पेंडिंग के लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने की कोशिश करें? सर आईएमसी की तरफ से तो हमने ये उनसे मांग की है कि थोड़ी जो टैक्स की प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई की जाए. एंड सो दैट इज हाउ व्हाट वी लुक एट. इवन इफ यू सिंप्लीफाई देम देयर विल बी अ ग्रेट रिलीफ along with any rationalization of slabs. और सर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, पहले जीएसटी अपने आप प्लेस में है, लेकिन जीएसटी में भी काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग कई सारे चेंजेस की जरूरत महसूस कर रहे हैं. पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने की एक बड़ी डिमांड है जो कि लोगों को रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसमें कुछ खास हो नहीं रहा. तो आप कैसे देखते हैं कि इस बार बजट में कुछ संभावना है उस बारे में, पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने के कुछ और? तो पेट्रोलियम के बारे में इतनी हमारी राय नहीं है, लेकिन हमने सरकार से यह दरख्वास्त की है
कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ऑल्सो जो नॉन प्रॉफिट के लगे हुए टैक्स है, वो सब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए। सर मैं बार बार एक बात करूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना ये सरकार की परंपरा रही है बजट में। जी। इस बार आप कुछ उम्मीद करें कुछ ऐसा, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार पूरी तरीके से ईज्ड है मैक्रो नंबर्स को लेकर के, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि स्पेंडिंग को लेकर? उम्मीद तो करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती हैं। शुक्रिया। And this also gives a confidence that we can consolidate it further. And next year, perhaps we could look at even lower benefit. IMF has forecast a good year for India. Basically, India has emerged as a brighter spot among the global economies. So, how does industry see it? How does you see it on the basis of how will the industry will perform? And do you see positive? Are you confident that the industry will perform well? I think the stage is set for industry to perform well, and the fact that interest rates are not increasing anymore, the fact that the inflation is range bound, the fact that the government is likely to continue the spend on the infrastructure and welfare schemes, the fact that the social security net to the vulnerable people looks within a tolerable range, and therefore any likelihood of unrest because of that is not going to be there. I think it's all set for industry to invest, perform much better. The only thing I see is that on demand side, because of the relatively higher inflation of the past, people need more money in hands to spend. And therefore, that is an area where more money in hands of the people through policy interventions, through tax interventions, through other economic initiatives would be an area of focus in the full budget and not so much in the interim budget. Thank you so much. थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूं? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। क्या कर छाता छाता यार क्या करती है बहुत। जय श्री राम। बारिश भी बंद हो गई।
ले जाऊं नहीं तो दौड़ ही जाएगी budget. So in that sense, I think this budget will underscore what the government has done in the past and what it will expect to do in the future. That is, it will be an interim budget and then they will do a final budget later to underscore that. If you look at the current environment in the context of the geopolitical tensions or before that the pandemic, I think the Indian government has done well to keep the economy doing very well. We're today the 5th largest in the world, growing at 6.5%, and we will be in the next few years the 3rd largest economy in the world. I think the government will continue to underscore its efforts in infrastructure. They have encouraged defense. I'm sure they will give a fillip to investments in space. They will work on roads, rail, airports, and build in looking at the way the world is looking at India, looking at the China Plus One strategy. Maybe they will try to give a fillip to manufacturing and also they should protect a little bit the Indian industry from maybe cheap imports that may be coming from other parts of the world, so that manufacturing grows और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उस पर हमारा ज़्यादा जोर लगा जाए. In past 10 years, we have seen this government in every budget comes with something which is a very different kind of initiative. Like just before the election in 2019, we have seen Krishi farmers benefit scheme, which was Kisan Samman Yojana. So in this budget also, do we expect something very out of the box scheme or something which change the scenario? I think interim budget has, though there will be some limiting, but I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them if you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming. So that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. India is definitely feeling some pressure from the fiscal deficit side. It's already 5.9. So investing in infrastructure is a very prime aim of this government we have seen in past many years. But how much liberty is have seen the present fiscal deficit and in this target of 4.5? So I think they had always said that they would be expecting to come to 4.5%. And so that was always meant to be a sort of a landing rate to get to there. And if I see the way the government moved, they have moved, monetary policy and fiscal policy have worked hand in hand. So you look at the finance ministry and you look at the RBI, they have worked largely in a very concerted fashion to make sure that also inflation remains within check and they continue to improve year on year. In past few years, we have seen that government is quite ambitious for a 5 trillion economy, and now the other agencies are also supporting the claim of Indian government that by 2030 will be a 7 billion economy, and the ambition of the government is to make India a 30 trillion economy by 2047. So, do you see something very out of the box in this budget which supports the aim of 30 trillion economy by 2047 or 7 trillion economy by 2030? I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they are growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is, and थोड़ा सा tweak करते रहेंगे, so it should improve and not go down. सर मिडिल क्लास जो है उसकी हमेशा उम्मीद कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब्स में रिलैक्सेशन की या टैक्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. इस बजट में सरकार कितना उस तरफ जा सकती है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, थोड़ा और स्पेंडिंग के लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने की कोशिश करें? सर आईएमसी की तरफ से तो हमने ये उनसे मांग की है कि थोड़ी जो टैक्स की प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई की जाए. एंड सो दैट इज हाउ व्हाट वी लुक एट. इवन इफ यू सिंप्लीफाई देम देयर विल बी अ ग्रेट रिलीफ अलोंग विद एनी रैशनलाइजेशन ऑफ स्लैब्स. और सर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, पहले जीएसटी अपने आप प्लेस में है, लेकिन जीएसटी में भी काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग कई सारे चेंजेस की
जरूरत महसूस कर रहे हैं। पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी लाने की एक बड़ी डिमांड है जो कि लोगों को रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसमें कुछ खास हो नहीं रहा। तो आप कैसे देखते हैं, इस बार बजट में कोई संभावना है उस बारे में, पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी लाने के कुछ और? तो पेट्रोलियम के बारे में इतनी हमारी राय नहीं है, लेकिन हमने सरकार से यह दरख्वास्त की है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ऑल्सो जो नॉन प्रॉफिट के लगे हुए टैक्स है, वो सब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए। सर, मैं बार बार बात करूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना इस सरकार की परंपरा रही है बजट में जी। इस बार आप कुछ उम्मीद करें कुछ ऐसा, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार पूरी तरीके से ईज है मैक्रो नंबर्स को लेकर के, तो ऐसे में क्या? हाँ बहुत बढ़िया, मैडम की गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अरे अमरेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अमरेला सर अभी नहीं, पहले हाँ उनके पास है छाते। ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें। इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो, अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ। सर और भी आ रहे हैं इनको प्रेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर शाबाश, थैंक यू सर। अपनी बोर्ड की खराब सही सही इतना तो बोल दिया। ये आ गया गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अमरेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। इनको तो बोलना पड़ेगा। सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले हाँ उनके पास है छाते। ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें।
उस तरफ वाले रखो अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ सर मेरे को थैंक यू सर अपने बोर्ड के द्वारा सही इतना तो बोल दिया ये आ गया गाड़ी भी बहुत बढ़िया बहुत यही शॉट है अबे अम्ब्रेला अबे ये अरे सर इधर भी देख लिया करो बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे इधर थोड़ा इधर भी ध्यान देना सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं पहले हाँ उनके पास है छात्र ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ सर मेरे को थैंक यू सर अपने बोर्ड के द्वारा सही इतना तो बोल दिया ये आ गया गाड़ी भी बहुत बढ़िया बहुत यही शॉट है अबे अम्ब्रेला अबे ये अरे सर इधर भी देख लिया करो बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे इधर थोड़ा इधर भी ध्यान देना सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं पहले हाँ उनके पास है छात्र ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें
अम्ब्रेला छत के ले जा रहे हैं यहाँ के। आगे चल, बस 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 इधर रोक दे और आगे ले, आगे थोड़ा सा आगे ले, बस 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 बस। अरे भैया झाड़ू, अरे भैया झाड़ू। दिया हुआ है। मैडम 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 मैं मैम
मंजूरी भी लगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना करेंगी, तो काफी महत्वपूर्ण है ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अमरेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। सर कैमरे लगे इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना सर। सर मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। बैठक के बाद बजट बैठक में रखी मंजूरी भी लगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर, मैडम सेंटर, मैम सेंटर। आगे चलो, बस 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 इधर लोग और आगे आगे थोड़ा सा आगे ले, बस 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 बस। अरे भैया झाड़ू, अरे भैया झाड़ू। दिया हुआ है हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीछे जो प्रतीक है वो ले आते हुए का जो फाइल है उसमें बजट की जो प्रतीक है वो दिखाते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं यहाँ से वो संसद भवन के आप देख रहे हैं फाइल है के साथ वित्त राज्य आगे चढ़ते मैम
बजट को बैठक में रखी थी, मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम बजट को बैठक में रखी थी, मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम बजट को बैठक में रखी थी, मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देना। मैम गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अमराना, अबे ये अरे सर इधर भी देख लिया करो। सर कैमरे लगे इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर, अभी नहीं पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री सुनो जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें।
छत के ले जा रहे हैं यहाँ सर कोई और भी आ रहा है इनको प्रेम शाबाश थैंक यू सर अपने बोर्ड के द्वारा सही इतना तो बोल दिया मैम गाड़ी भी बहुत बढ़िया बहुत यही शॉट है अबे हमरे ना अबे ये यार अरे सर इधर भी देख लिया करो यार इनको तो बोलना पड़ेगा सर कैमरे लगे इधर थोड़ा इधर भी ध्यान देना सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं पहले हाँ उनके पास है छाते ये मंत्री नरेंद्र सोनू जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए समाधान करें इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो अम्ब्रेला छत के ले जा रहे हैं यहाँ सर कोई और भी आ रहा है इनको प्रेम शाबाश थैंक यू सर अपने बोर्ड के द्वारा सही इतना तो बोल दिया ये आ गया गाड़ी भी मैम मैम
देख लिया करो। सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें। इनको बोलो छाता उस तरफ वाले रखो, अम्ब्रेला ढक के ले जा रहे हैं यहाँ से। सर इनको प्रेम शाबाश, थैंक यू सर। अपने बोर्ड की द्वारा सही है, इतना तो बोल दिया। ये आ गया। गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अम्ब्रेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा। सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले उनके पास है छात्र, ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें। गाड़ी भी बहुत बढ़िया, बहुत यही शॉट है। अबे अरे अम्ब्रेला अबे ये यार, अरे सर इधर भी देख लिया करो। बोलना पड़ेगा। सर कैमरे लगे हैं इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान देना। सर 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 अम्ब्रेला सर अभी नहीं, पहले
उनके पास है छाते, ये मंत्री जल मंत्री अरे इनको बोलो कि जल बारिश के लिए कुछ समाधान करें। थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देख रहे अरे छाता बंद करूं, अरे ये नहीं छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। क्या has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges with Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra. The government overcame those challenges in the right way. Structural reforms were undertaken. Programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and contribution. The economy got vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all regions. Our government strengthened its mantra Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, social inclusivity, coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the goal of Sabka Prayas, the
the country overcame the challenges of one century pandemic, took long strides towards Bharat, committed much part, and laid solid foundations for the coming part. As a result, our young country has high aspirations, pride in expressing, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to development programs thus mentioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual gas थोड़ा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। बंद करूं? अरे ये नहीं, छाता बंद कर दो यार, छाता पीछे कर दो। यही शॉट है। हमने ना अरे सर इधर भी देख लिया करो। सर कैमरे लगे इधर, थोड़ा इधर भी ध्यान दे रहे सर। सर सर अभी नहीं, पहले उनके पास है जल मंत्री इनको बोलो कि बारिश के लिए समाधान करें। So that the social and economic transformation as a climate need to छाता उस तरफ अम्ब्रेला छत के ले जा रहे हैं यहाँ सर Thank you, sir. Resulted in very modern when the poor people are powered government's power crisis with the pursuit of subcontracts. In these 10 years, the government has assisted 25 crore
get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them. Direct benefit transfer of 34 lakh crores from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 1.7 lakh crores कैमरा लगे इधर थोड़ा इधर for भी ध्यान the देना government. सर This savings has been realized through avoidance अभी नहीं पहले the savings have helped to provide more funds for Garib Kalyan. PM Swadhyay has provided credit assistance to 78 lakhs people. From that total of 78 lakhs members, 2.3 lakhs have received credit for the third time. PM Jan Dhan Yojana reaches out to the particularly vulnerable who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftsmen engaged in 18 The schemes for empowerment of Divyang and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year, the PM Kisan Samman direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Bank has integrated 1,261 and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level.
chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically,
Global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist
the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted
2.4 lakh SHGs, and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing
This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit
in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period
of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following our strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind.
आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।